Ladies and gentlemen, welcome to iFactioners Learn Punjabi through English video tutorial. Let's learn to translate some English sentences in Punjabi. Don't talk nonsense. In Punjabi, we will say bakwas, mat karo, na karo, और बकवास गल्लां ना करो बकवास ना करो बकवास गल्लां ना करो Don't argue and come in बहस ना करो ते अंदर आओ We can also say बहस ना कर ते अंदर आ but if we want to show some respect then we can say बहस ना करो ते अंदर आओ और बहस ना कर ते अंदर आ Don't make excuses In Punjabi we will say बहाने बहाना or excuses are bahana and excuses are bahane na banao bahane na banao Go out and play with your friends In Punjabi we will say bahar bahar is outside bahar jao te apne ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ or we can say ਬਾਹਰ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ Next sentence is It's cold outside In Punjabi we say bahar ठंड है or we can also say bahar ठंड है bahar ठंड है bahar ठंड है and sometimes we don't pronounce this n so we say bahar ठंड है Baby, let me sleep. I have to do a lot of work tomorrow. In Punjabi, we will say, Baby, मैनू सौन दे या और सौन दियो. Both are correct. Baby, मैनू सौन दे. Baby, मैनू सौन दियो. मैं कल बहुत सारा काम करना है और बेबी मैनू सौन दियो मैं कल बहुत सारा काम करना है Good morning honey So you can say good morning in Punjabi also good morning प्यारे प्यारी good morning प्यारे So let me write it like this प्यारे Baby wake up Baby जाग या फिर और बेबी जागो Don't disturb me baby so if you are let's suppose saying it to a child then we say
बच्चे मैनू परेशान ना कर और फिर और करो। बच्चे मैनू परेशान ना करो, बच्चे मैनू परेशान ना कर। Baby, where are you? So we can say baby तू किथे है, तू किथे है। Or we can also say it like this, baby तुसी किथे हो। So if you are talking to an elder person, or if you want to show some respect, then you can say तुसी किथे हो। And if you are talking to a younger person, then you can say तू किथे है or तू किथे है। Turn off the light. बत्ती बंद करो, बत्ती बंद करो, बत्ती बंद करो। Don't run. So we say भजना, भजो। We can say भजो ना या फिर भजना। भजो भी we can say in some accents we pronounce it as bhaj, bhajo, and in other accents we say bhajo, bhaj. So if you want to show some respect, then bhajona or bhajona, and if you are talking to a younger person, then we can say bhajana, bhajana. Sure, you can do that. यकीनन तुसी ओह कर सकदे हो। यकीनन तुसी ओ कर सकदे हो, यकीनन तुसी ओ कर सकदी हो। So we use सकदी हो for female and सकदे हो for male. Don't tease the cat. बिल्ली नू ना छेड़ो, or we can say बिल्ली नू ना छेड़, बिल्ली नू ना छेड़ो, बिल्ली नू ना छेड़। Don't go under the bed. मंजी थल्ले ना जाओ या फिर और मंजी थल्ले ना जा। So जाओ is for respect, to show some respect, and ja is when we are talking to a younger person or a friend. Go to bed. बिस्तर ते जाओ, बिस्तर ते जाओ, और we can say बिस्तरे ते जाओ और मंजी ते जाओ। Please get up from the bed. We can say मेहरबानी करके और कृपा, कृपा और मेहरबानी करके। मंजी of manje, in some places we also call manja, and in other places we say manji। मंजी तो उठ और उठो। कृपा करके मंजी तो उठो और मेहरबानी करके मंजी तो उठ, मंजे तो उठ। No life without wife. We can say बुढ़ी, वोटी, पत्नी, बीवी। We can use all these words for wife. Let me write बुढ़ी तो बिना
कोई जिंदगी नहीं। बुढ़ी तो बिना कोई जिंदगी नहीं। वोटी तो बिना कोई जिंदगी नहीं। इट्स वेरी नाइस है बहुत वधिया। वधिया है और है बहुत वधिया है बहुत वधिया है बहुत वधिया है। Ladies and gentlemen, thank you very much for joining me. If you have any questions or comments, then please use the comment section below. If you have liked this video, then please give it a thumbs up and share it with your friends and family members. If you are new to my channel, then please consider subscribing. I will see you next time. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. Hi, Factner.